I think I should be audible. Can you hear me? Okay. Hi guys, how are you all? Just a minute, we'll start soon. Yeah, so we'll start in 2 minutes. Um,
Okay, so let's start. Um, Before starting on, let me just introduce myself very quickly. My name is Aarushi Anand, and I'm from Hindu College Zoology Honors. And I gave my CUET exam in 2023, which was last year, and I got 100 percentile in three subjects: bio, psychology, and English, and around 99.8 in physics and 99.8 in chemistry. So I hope that these PYQs are helping you and you guys can ask specifically for any sort of help if you need. Okay, and as we know that what exam factor is offering you, so there are mock test series. It's available for subjects like accounts, BST, economics, maths, physics, chemistry, biology, history, geography, political science, psychology, English, and general test. So you guys can avail that if you need a lot of like practice, and you should do matlab practice. Okay, and revision के लिए they also have Crash Course, which is again available for accounts, economics, maths, physics, chemistry, biology, history, political science, English, and general test. So, you need a lot of revision and a lot of practice to, because there are a lot of reasons. Like you need to make a strategy of how you're going to do the exam, because it's a CBT exam. It's not something that you're going to write like boards, right? So you need to have that kind of practice before you go to CUET, so that it doesn't feel like, what are you doing? Like, what is happening? Right. Like it kind of, honestly, I'll be very honest, it kind of happened with me when I first gave my CBT exam, that what is this? Like I wasn't really kind of ready for that, but theek hai, chalo manage kar liya. But you guys are getting a chance now to experience all of this, like to practice a lot before it starts. So I think you should take use of that. Yes, so these are some questions that we've already done. We are gonna start today with, and yes, आज वो लैपटॉप वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. So we are gonna start with, um, ऐसे कल भी हमारे ये रह गए थे, मतलब कल लैपटॉप बिल्कुल नहीं चला था. बट हाँ, अभी हम इसको भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं. लाइक वैसे मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया था, तो आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी, बट ज़रूरत होगी तो बताना. सो यस, वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो लेट्स से इट्स क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अब इसको कर दो बोल्ड. एक सेकेंड, ये कुछ तो गड़बड़ हो रखी है इसमें. So transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube is called the transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube is called the dash method. Your options are ZIFT, ICST, uh, GIFT, and IVF.
सो आंसर क्या होगा इसका? चलो लेट्स सी। एक सेकेंड। ठीक है, पहले हम ना इसकी फुल फॉर्म्स लिखते हैं। तो यार वो क्या है, ऊपर जो ये क्या हो रहा है, वेट, अरे हाँ ओके ओके, यस नाउ इट्स कूल। चलो अब हम ना सबसे पहले लिखते हैं इनकी full forms. So ZIFT. What's ZIFT? ZIFT is Z से zygote, intra-fallopian transfer. ठीक है, अब जायगोट जो है इंट्राफलोपियन जो है दैट मीन्स दैट आप डोनर से उसको फलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पार्ट ये बोलता है, बट क्या जायगोट के बारे में बात हो रही है? जायगोट के बारे में बात तो नहीं हो रही ना, ओवम के बारे में बात हो रही है। अगर हम ओवम डाल रहे हैं, ठीक है, जायगोट इज ओवम डाल रहे हैं, वो हो गया फीमेल गैमेट, एंड जायगोट इज समथिंग जो खुद नहीं बन सकता फीमेल गैमेट से, या तो तुम मेल गैमेट डाल रहे हो तो जायगोट अपने आप बन जाएगा। तो हाँ ठीक है, सोच सकते थे इस बारे में, बट हम ओवम की बात कर रहे हैं, है ना? ओके, नाउ वी कम टू ICST। आई थिंक ICSI होता है ना, इंजेक्शन होता है ना लास्ट में, नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, but as far as I know it's intracytoplasmic intracytoplasmic sperm injection, right? हाँ ICSI होता है। ठीक है, तो इसमें तो हम बात करें स्पर्म को ओवम एग में डायरेक्टली इंजेक्ट करना, which can also be not the case. Now this is gamete intrafallopian transfer। तो ठीक है, तो काफ़ी एविडेंट है that the answer is this, and I hope that it is very clear that why the answer is this. And also IVF is in vitro fertilization, in vitro fertilization which means टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराना, in vitro fertilization. Okay, so it's pretty simple, right? And we have इसका आंसर है C, which is gift only. And एक बार ये भी आपको मैं बता दूं कि जो गिफ्ट होता है ना, उसमें ओवम कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, when the another female cannot produce one, but can provide a suitable environment for fertilization takes place. ठीक है, now, whereas ZIFT stands for zygote intrafallopian transfer, which involves transfer of zygote up to 8 blastomeres, ठीक है, इसीलिए वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगर हम ज़्यादा का करते तो फिर कहाँ होता है? यूट्रस में होता है ना, into the fallopian tube. Now ICSI, right, जैसा like I said इंजेक्शन होता है, तो ICSI which stands for intracytoplasmic sperm injection, जैसा कि मैंने बोला था, and is the method of injecting the sperms directly into the ovum in vitro. IVF stands for in vitro fertilization. ठीक है, so now question number 2, let's say
Now, this is an assertion reason question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the another is labeled as reason R. Assertion A says Leydig cells synthesize and secrete male testicular hormones called androgens. Reason is androgens stimulate the process of spermatogenesis. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options below. ठीक है, then you know what are the options assertion में. You solve this question till the time I'll bring my charger for the laptop. Yes. So, well, assertion तो मुझे सही लग रही है. What do you think? Is the assertion correct or not? Okay, so reason पढ़ते हैं एक बार. Androgens stimulate the process of spermatogenesis. Leydig cell synthesis and secrete male testicular hormones called androgens because androgens stimulate the process of spermatogenesis. ठीक है, so अब look, spermatogenesis androgens, this is also correct. So reason and assertion correct तो है. Now we have to see that is reason the correct explanation for assertion. So what are like Leydig cells पे होता क्या है? तो LH act करता है, right? Leydig cells then they stimulate say and stimulates um, the secretion of androgens, right? And इसकी वजह से क्या होता है, spermatogenesis होता है, right? Which is the release of sperms. ठीक है, so um, what do you guys think what should be the answer इसका? I want you guys to tell me what is the answer for this.
देखो, आई बी ऑनेस्ट, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर शुड हैव बीन बी, बिकॉज there's no um, like not a lot of sense कि Leydig cells androgen secrete करते हैं क्योंकि androgens stimulate the process of spermatogenesis, but since these lines are so much closely related and probably NCERT में भी back to back आती होगी, तो इसका आंसर might be A, ठीक है, but I would have probably either left this question or done B. मतलब मैं probably A नहीं करती, but आंसर की के हिसाब से इसका आंसर ए है. So now it's like your choice. You have got this beautiful advantage that you can leave 10 questions in CUET and it's a big deal. ठीक है, so it's not something that you should be worried about, but yeah, it is what it is. Now question number 13, or let's say it's 3. कल हमने 10 किया था तो उसकी continuation में the active protoxin gets converted into an active form due to this, तो we've discussed. I don't think so इसको ज़्यादा देर लगनी चाहिए. So इसका तो बहुत simple answer है temperature and acidic pH of gut. So acidic pH is the wrong, right, क्योंकि alkaline pH होता है. Exposure to light and then exposure to light and acidic pH of gut, again wrong. So they could, all three of these options does not really make a lot of sense. So the answer is alkaline pH of insect's gut. We've discussed this question before, so it shouldn't be a problem. Alright, so the answer is A. Now question number 4. Which of the following gets embedded in the endometrium during implantation? Very nice question. और इसका सीधा सीधा मुझे आंसर भी दिख रहा है कहीं पे. So zygote, morula, blastocyst and embryo. And then like बहुत ही important चीज़ लिखी हुई है implantation के बारे में book में. Very very important. ओके, सो देखो जितना तुमने रिवाइज किया होता है ना उतना तुम्हारा आंसर एविडेंट होता जाता है दैट यस दिस इज द आंसर एंड यू कैन मतलब टेल दैट दिस इज द आंसर. ठीक है, सो इन दिस केस I haven't touched NCERT probably for like an year, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है मैंने, but I know the answer is this thing. पहले हम बात करते हैं zygote क्या होता है या फिर okay, let's just start straight away with the answer. So the correct answer is blastocyst. Why? Because जब implantation होती है मतलब it's getting embedded in the uterus, in the endometrium, ठीक है, that is implantation. And there is a बहुत ज़्यादा phenomena given कि जब implantation होती है तो endometrium की wall plus the placental wall plus the placenta kind of, they form chorionic villi and placenta, sorry. So it becomes a
न्यूट्रिशन पाथवे और अ पाथवे जिससे न्यूट्रिशन आता है एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो नहीं चाहिए वो जाते हैं. So there's a whole process that is given which is very very important and you should learn that. I mean that should be by heart. ठीक है. एंड जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रिन वॉल में एम्बेडेड हो जाता है सो इट डिवाइड्स वेरी रैपिडली. ठीक है. एंड दैट causes like that then it becomes this leads to pregnancy and that kind of that then becomes the baby, right? I mean और फिर डिफ्रेंसिएशन होती है उसमें. तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स से इट्स क्वेश्चन नंबर 5. So, introduction of which one of the following organism species did cause decline or extinction of indigenous species? So it says stellar sea cow. ये तो आपका extinct या endangered species है. Is it extinct or it's in danger? जहाँ तक मुझे याद है it's an extinct species. Extinct species है ये तो आपकी. मैंने एक तो कर दिया eliminate. Now you tell me what is the answer of amongst these three. Yes, so what is the answer? Stellar sea cow, though I've already told that this is an extinct animal, है ना? And तो अगर हम बात करें इकॉर्निया क्रेसिप्स एंड क्लैरियस गैरीफाइनस, ठीक है, they as far as I remember that they were alien species में थे, है ना? But as far as I remember as a correct like as the correct answer it's this Nile perch because it's like the option in the NCRT definition is kind of बहुत ज़्यादा given, which is that Lake Victoria में when Nile perch was introduced, it eventually led to extinction of ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. Ecornia was like I think
थोड़ा सा नाम में प्रॉब्लम है अभी, वेल यही चैप्टर करेंगे हम, सो we'll get to know its lips loops. Now question number 16. Match list 1 and list 2. Wait, ये तो कुछ गड़बड़ है. कंसिडर करो लिस्ट है ये ऐसे. मैं जब तक लिस्ट पढ़ती हूँ, आपकी लिस्ट 1 से प्रोजेस्टा स्टर्ड, सहेली, lips loops, periodic abstinence. List 2 says once in a week pill, hormone releasing IUD, non-medicated IUD, and natural method for birth control. Like I've always said, कि we will always start with the easiest. For me, the easiest would be probably सहेली. ठीक है भाई, this question is pretty easy. मतलब ऐसे questions आए तो you can do it बहुत अच्छे से. Yes, so Saheli is once in a week pill. Wait, चलो ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. Okay, periodic abstinence is, मतलब वहाँ पे तुम्हें ऐसे कलर करने का टाइम नहीं मिलेगा ना, तुम्हें कलर करना है, but this is something that you can, I mean this is something that I am doing for your convenience. ठीक है. नाउ वी हैव प्रोजेस्टेरोन, नाम में ही है प्रोजेस्टेरोन, और हमें पता भी है कि ये व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज लाइक व्हाट इट एग्जैक्टली डज, वो रोकता है, वो it stops, it prevents pregnancies, so it becomes a contraceptive device. Now then lips loop obviously definitely becomes non-medicated IUD, which is true also. What is this? So the answer is A ka 2, which is in 3 options, B ka 1, which is in C ka 3, and D ka 4, which is correct. So yes, this is the correct option. C is correct option. Let's check also once. Yes, it's correct. C is the right option. Now, the vital link that ensures continuity of species between organism of one generation to the next generation is A. Male gamete, B. Female gamete, C. Zygote, and D. Syngamy.
Hmm. सो देखो, फीमेल मेल गैमीट से जनरेशन कंटिन्यू हो सकती है क्या, मतलब ओनली मेल गैमीट से या ओनली फीमेल गैमीट से? तो दीज आर जस्ट गैमीट्स, राइट? एंड syngamy is a process, like it's a process, it's fertilization, it's when zygote forms, it's when zygote formation happens. And male gamete से खाली आप, like you need females to carry on the generation. So with male gamete you cannot do that entirely. With female gamete maybe some, like parthenogenesis can happen and this can like work out a little, but then उससे सिर्फ एक ही species आएगी, तो generation continue नहीं होगी. So the only correct option for this answer is zygote, because zygote makes the most sense, and it's actually given, I think it's the first chapter जिसमें ये दिया हुआ है, so that you can see. ठीक है. Now the explanation says that gametes are reproductive cells of sexually reproducing organisms. The vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next generation is the zygote, whereas the process of fusion of gamete is called syngamy and is result in the formation of diploid zygote. ठीक है. Now this is a very very nice question because it takes the concept out of the book. Okay. So in case of COVID positive patients, presence of coronavirus is suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. But when the symptoms of disease has not appeared, the coronavirus in body can be detected by. So your options are Vidal test, ELISA, recombinant DNA technologies only, and RT-PCR. Well, the answer is pretty clear. इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. Yes, so the answer is pretty evident. I mean, well, but still, thoda, we'll start with Vidal test. So this is a test which is used for typhoid. Yeah, actually I feel like हमने रिवाइज भी काफी अच्छा किया है, मतलब मैं ऐसे I was thinking about it and I was like बहुत जल्दी जल्दी किया है रिवाइज, तो it might not have helped you, but I think we have tried, मतलब उससे हेल्प मिली होगी आई थिंक. आई मीन इफ यू हैव रिलीजियसली सीन द वीडियो, ठीक है, मतलब कम से कम ये तो पता चला होगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बिकॉज at the end of the day you have to study, right? I am just here to discuss question answers. So this is a test that is for typhoid, so this is not the answer, of course. Again, this is a test which is for AIDS, but and while AIDS is retrovirus, but still the answer is not going to be this. Now it's pretty evident that देखो जब only की बात आती है ना, तो it जब only आ जाता है ना इसमें, तब it kind of loses its credibility, its chances to be right. So the word only is kind of misleading here. So that's why we are not choosing these answers. So option C, देखो जब तुम्हें कोविड हुआ होगा अगर, सो जो तुम्हारे घर में टेस्ट करने आए होंगे उस टेस्ट को हम आरटीपीसीआर कहते थे, राइट? व्हाट इज आरटीपीसीआर? आरटीपीसीआर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो जो पीसीआर होता है उस दैट इज बेसिकली जो हमारे बुक में है वो है फॉर not that's not for retroviruses, but if we are doing it for retroviruses, so we have to like make RNA say DNA and then that happens. So that's reverse transcriptase polymerase chain reaction, RT-PCR test, and this is the right option. Now we are doing question number 19. Bacillus thuringiensis is a control agent against
आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज कम बिफोर, और ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है. वेल, बैसिलस थेरेनजेनेसिस एक बहुत टॉक्सिक प्रोटीन कैरी करते हैं, विच इज बेसिकली अ प्रोटॉक्सिन. And when it goes to the gut of the insect, it in the alkaline gut of insect, it becomes a insecticidal agent. So basically what they do is what they release is an insecticidal thing. So answer is C. ठीक है, it acts against the insect pests. Right, now question number 10. This is the last question, and then we'll be doing ecosystem wala chapter like very quickly, I guess. It says 10. Arrange the following events in the female reproductive cycle in their natural sequence. So ये बहुत easy है, तो हम साथ में कर लेते हैं. I mean, very easy. Or should I give you a minute? Or like I'll give you 30 seconds. Okay, so it might need a little bit of understanding. So the sequence is ovulation, growth of corpus luteum. हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन देयर नेचुरल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं. सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ LH, secretion of FSH, and E, growth of ovarian follicle and oogenesis. ठीक है, सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो FSH पहले आता है या फिर ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड oogenesis होता है. तो अब इसका तो हम पता लगा ही सकते हैं कि आंसर लाइक E और D में से सही क्या है, राइट? हाँ, तो E और D में से सही क्या है? सो यार देखो, ऐसा है कि FSH जब आता है, देन उसके बाद ग्रोथ होती है. लाइक FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट? तभी फॉलिकल बनेगा. तो D हैज टू बी द फर्स्ट. D हैज टू बी द फर्स्ट. ठीक है, सो अब जब सिक्रीशन ऑफ FSH हो गया, देन इट वुड बी ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. जब FSH आ गया तो ग्रोथ होगी, राइट? तो इट हैज टू बी द सेकेंड. It has to be 2. Now sudden increase in the level of LH, like then what happens? Then yes, this happens, right? Sudden increase in the level of LH. LH के बाद होती है ovulation. So then growth of corpus luteum happens. Oh sorry, that becomes 1 2 3 4 5, right? So अब हम देखते हैं DECAB. So B is the correct option. I hope it makes sense, right? And let's check the answer. It's B. ठीक है. Now I'll just take a moment to quickly open the PDF for ecosystem. Ecosystem ही पढ़ना है ना आपको. I mean chapter number 15. Chapter 15. Bio NCRT. Biodiversity and conservation.
Okay, so yes, आ गया. Um, screen change करने दो एक minute. Biodiversity and conservation. All right, so let's get started with this. Just a second. Hi Om, how are you? And how are you liking the videos or the sessions? So, okay. Now it says that if an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would be the probably be the enormous diversity of life that he would encounter. So this is not important, but this is wait, highlight. Yes, so we have 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. And honestly, by the time जब मेरा CUET आया था मुझे ये वाली चीज़ भी याद हो गई थी, which was pretty irrelevant. But you need a little bit of preparation since the competition is a lot. ठीक है? So now our biosphere, in our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at levels of all biological organizations, ranging from macromolecules within cells to biomes. ठीक है. Now we have three, मतलब we have basically diversity at three biological organization levels, which is one genetic diversity. So a single species might show a high diversity of genetic level or distributional range. So the genetic variation shown by medicinal plants Revolvia, this is an important example. Vomitoria growing in different Himalayan regions might be in terms of potency and concentration of active chemical reserpine. ये भी बहुत important है, ठीक है. सो नाउ बेसिकली अगर मेरे पास आई जीन है ब्राउन कलर का तो हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना उसमें जीन्स में वी हैव डाइवर्सिटी सो दैट्स दैट देन स्पीशीज लेवल में वेस्टर्न घाट्स हैव हायर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी दैन ईस्टर्न घाट्स ठीक है नाउ इकोलॉजिकल लेवल पे देन देयर इज इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी व्हिच इज लाइक आपका रेन फॉरेस्ट एरिया और डेजर्ट एरिया और दैट राइट. Yes, so how many species are there on Earth and how many in India? So this is very very important. And अगर मैं पूछूं IUCN क्या होता है तो International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN, which was basically a conservation like एक यूनियन थी इंटरनेशनल यूनियन थी कमेटी कह लो 2004 में. सो इट सेज दैट हमारे पास जो प्लांट्स है देर स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन बट वी हैव नो क्लियर आइडिया. ठीक है एंड देर इज़ अ बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम आइडियाज. ठीक है जैसे रॉबर्ट मे का है. रॉबर्ट मे प्लेसेस दैट ग्लोबल डाइवर्सिटी species diversity is about 7 million which is a lot. ठीक है some extreme estimates are 20 to 50 million which is again a lot right और 7 million में से हमने कितने निकाले 1.5 million अभी तक हमें पता है. So these so now among animals so we have that more than 70% of all species recorded are animals while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperms and angiosperms comprise no more than 22% of the total. ठीक है making more than 70% of the total. So now इसमें ना क्या करो एक टेबल बनाओ जिसमें ना आप लिखो एवरी चीज कि एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स यू राइट लाइक एनिमल्स आर मोर देन प्लांट्स देन यू राइट चलो आई विल राइट इट विद यू. ठीक है देखते हैं हम करते हैं 70% प्लांट्स हैं 70% are plants then we have wild plants sorry 70 sorry I'm so sorry 70% is animals
Then we have plants that comprise no more than 22% of the total. ठीक है, 22% is plants. Among animals, insects are the most species-rich taxonomic group. Then we have insect species as the most species diverse. Insect the most. Then making up 70% of the total. ठीक है, 70% of the total. Uh, that means, again, how do we explain this enormous diversification of insect? Because देखो there are a lot of reasons, उनकी काइटिन की वो होती है, so ऐसे ऐसे करके reasons होते हैं, but I don't think so ये book में दिए हुए हैं, तो you don't have to worry about that. But yeah, चलो अभी इस paragraph में तो यही stats थे, just kind of like लिख लिया करो इसको कहीं पे, so it will help you. Now invertebrates, other animals. So invertebrates में we have invertebrates क्यों ना जिनकी vertebral column नहीं होती, ठीक है, so we have insects, then we have mollusks, crustaceans and other animal groups. Vertebrates में we have fishes, the most amount of fishes, then mammals, birds, reptiles, amphibians. Plants में we have fungi and angiosperms, then we have mosses and ferns and allies, then algae and lichen. ठीक है, नाउ इसमें दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी हम क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज इनको काउंट करना इज वेरी डिफिकल्ट, प्लस वो लैबोरेटरी में तो लाइक एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज लाइक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट given right here that India has only 2.4% weight. India has only 2.4% of the world's land area. Its share in the global species diversity is an impressive 8.1%. So it says that हमारे पास species diversity बहुत ज़्यादा है, and it makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. ठीक है, so इसमें लिखी है species कितनी है, इतनी species plants की है, twice as many as animals. देन रॉबर्ट मे के हिसाब से हमने सिर्फ 22% स्पीशीज़ निकाली है, सिर्फ 7 मिलियन का सिर्फ 1.4 मिलियन निकाला है, तो हमारे पास 1 लाख स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स होना चाहिए, 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ एनिमल होनी चाहिए, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड राइट, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गिवन हियर दैट, बट ये तुम्हारा बोर्ड्स में आता है, सीयूटी में कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है? नाउ वी हैव पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज फेवरेबल होता है बहुत इन्वायरमेंट, ठीक है? सो इसमें इसमें लिखा है, इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं. नाउ आई कैन नॉट टीच यू एग्जाम्पल्स बट आई जस्ट मार्क इट फॉर यू, राइट? सो इट सेज दैट कोलंबिया में इतनी स्पीशीज ऑफ बर्ड है, देन न्यूयॉर्क में इतनी, and India, with much of its land in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. ठीक है? Now Amazon rainforest में it's home to more than, this is very important, 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates. ठीक है? नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है ये क्या मतलब ट्रॉपिकल में ज़्यादा क्यों होती है. सो स्पीसिएशन is generally a function of time, and unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed. ठीक है, सो उनको बहुत टाइम मिला है टू स्पीसिएशन होने का. ठीक है, नाउ ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, सो अगेन बहुत ही नीश स्पेशलाइजेशन देते हैं, एंड देन सोलर एनर्जी ज़्यादा है, तो हायर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू हायर डाइवर्सिटी, ठीक है? नाउ दिस इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. तो एक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट था जिसने पता किया कि ये जो एक रीजन है इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे स्पीशीज बढ़ती है, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट देन इट स्टॉप्स, ठीक है? So the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt observed that within a region, species richness increased with increasing explored area, but up to a limit. So in fact, the relation between species richness and area of wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola. Hyperbola is this कि ये मतलब एक पॉइंट पे ऐसे कांस्टेंट होता जाता है, ठीक है? नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर. इट्स नथिंग बस
इसका कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। एंड देयर आर सम वैल्यूज ऑफ z that is given, which is the regression coefficient that also you should know. Now the importance of species in ecosystem. तो इसमें आपके दो तीन एग्जांपल दिए हुए which are very very important. ठीक है, सो एक तो डेविड टिलमैन का है वो प्लॉट का, तो उसने निकाला था दैट हायर बायोमास मतलब जितनी ज़्यादा स्पीशीज होगी लेस वेरिएशन होगा इन द बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव एक हाइपोथेसिस विच इज़ पॉल एलरिक की river poppet hypothesis that in an aeroplane, ठीक है, is like a world is like an aeroplane जिसमें जो components है वो species हैं now, and species are like nut and bolt of it rivets, ठीक है। so अगर हम किसी seat का nut निकाल देंगे तो it wouldn't be that important or wouldn't hamper the functioning of the aeroplane, but अगर गलती से एक भी विंग का निकाल दिया सो इट वुड हैम्पर अ लॉट, ठीक है। सो दैट्स द होल हाइपोथेसिस विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। देन वी हैव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक सेकेंड, पेज थोड़ा बंद हो गया था, एनीवे सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस, सो नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दिस केम इन माई बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, एंड इसकी वजह से मेरा एक मार्क गया था, एंड आई न्यू माई पेपर wasn't really great because of this question. The question was कि इनवर्टिब्रेट्स कितने एक्सटेंट हुए हैं, either it was invertebrates or it was vertebrates, and दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों में सिर्फ like 338 and 359 है। so I was like बहुत ज़्यादा ऐसे कि हाउ कैन दे आस्क दिस क्वेश्चन इन बोर्ड्स। तो अगर ये बोर्ड्स में हो सकता है तो ये सीयूईटी में तो बिल्कुल हो सकता है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड हाउ मेनी स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट, एंड इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं डोडो from Mauritius, Quagga Africa, Thylacine. This comes as a match the following also. And when I was doing my CUT ka prep, so there were a lot of match the following questions around this. That Thylacine is from Australia, Stellar Sika is from Russia, and tiger की subspecies like Bali, Javan, Caspian, these are tiger species, ठीक है। Now again there are some stats, देखो stats तो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, फिफ्थ और सिक्स्थ एक्सटेंशन की बात हुई है यहाँ पे। so what I'd suggest is that यहाँ पे ना सारे stats एक बार लिख लिया करो इस एरिया में, ठीक है, so that you can have a quick revision at the time of your exam. Now, evil quartet is something four causes of biodiversity loss. First is habitat loss and fragmentation. This is the most important cause. It's written also and it comes in exam also. So more than four हमारे जो Amazon rainforest है, सॉरी रेन फॉरेस्ट है, 14% बनाते हैं, एंड नाउ इट्स ओनली 6%। इसमें हम अमेजन की बात की हुई है और इसमें बहुत अच्छा लाइक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल्स, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ हाउ वी हैव लॉस्ट मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, ठीक है। एंड ये आपकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करता है। देन वी हैव ओवर एक्सप्लॉयटेशन व्हेन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड। सो नाउ इट्स रिटन दैट स्टेलर सी काउज एक्सटिंक्ट हो चुकी है एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का। नाउ वी हैव एलियन स्पीशीज इन्वेजन, दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी डिड ऑल्सो टुडे, राइट, हियर इट इज। Now you must be familiar with environmental damage caused and threat posed by native species by invasive weed species like carrot grass, Parthenium, lantana, water hyacinth, which is Ecornia. The recent illegal introduction of African catfish for aquaculture purpose is posing a threat to indigenous catfishes in our rivers. तो इसमें ना देखो बेसिकली ये वाला भी था एक ऑप्शन में और ये भी था, तो बेसिकली इसमें लिखा है पोजिंग अ थ्रेट और इसमें लिखा है इट इवेंचुअली लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ दिस मच स्पीशीज। सो आई डोंट नो, आई वुड हैव लव्ड दैट क्वेश्चन, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये क्या बोलूँ कि आपको ये समझना है ये आंसर क्यों है, बिकॉज sometimes you get confused, right? So
what did I say? Sometimes you get confused. मैंने क्या बोला? I don't know. Sometimes you get confused. So anyway, co-extinctions. So now अगर एक प्रे स्पीशीज हो गई, सॉरी हाँ एक प्रे स्पीशीज हो गई तो उसका प्रेडेटर अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल दिया हुआ है. प्लांट पॉलिनेटर में भी होता है, मतलब अगर कोई पॉलिनेट करने वाला नहीं है तो इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो जाएगी ना. सो इट्स लाइक दैट. Now we have why should we conserve biodiversity, और इसके थ्री अप्रोचेज है. फर्स्ट इज नैरोली यूटिलिटेरियन, कि हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, फायरवुड मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है. 25% ऑफ द ड्रग्स जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो इसी से चलती है, प्लांट से ही चलती है एंड स्टफ. देन वी हैव ब्रॉडली यूटिलिटेरियन which says that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. ठीक है. देन उसमें ना ये स्टैट्स लिखे हुए हैं. 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ's atmosphere comes from Amazon rainforest. Then pollination is very important. पॉलिनेटर पॉलिनेट अगर हम करने लग जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा, मतलब काम धंधा छोड़ दो यही करते रह जाएंगे खाना खाने के लिए बस. ठीक है. नाउ एथिकल रीजंस आर देयर दैट स्पिरिचुअली फिलोसफिकली हमको अपने आसपास स्पीशीज बचानी चाहिए ना. इट एंड इट्स नॉट जस्ट आवर प्लानट, इट्स एवरीबडीज प्लानट, राइट. Then how do we conserve biodiversity? We have in situ conservations in which we preserve the species का ही spots. ठीक है. And we have like very important points in this. I think ये last part आ गया. Right. So, on a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. Now we have endism. Endism is what? Species with high degree of endism, that is, जो species है वो that is confined to that area और वो कहीं और पे नहीं मिलती. So initially 25% biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list. So we have total 34 biodiversity hotspots. So biodiversity hotspot is something which has high level of species richness and high degree of endism. Very, very important. Both the aspects. Okay. So these hotspots were also regions of accelerated habitat loss. Three of these hotspots are in India, which is in Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma, and Himalaya. So cover our country's exceptionally high biodiversity area. Although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of Earth's landmass, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by almost 30%. ठीक है. In India, we have we have ecologically unique and biodiversity rich regions that are legally protected as biosphere reserves. We have national parks, we have sanctuaries. So India has 14 biosphere reserves, 19 national parks, and 448 wildlife sanctuaries. इंडिया हैज़ ऑल्सो बहुत ही कल्चरल इंपॉर्टेंस देते हैं. सो वी हैव सीक्रेट ग्रुप्स दैट आर फाउंड इन खासी जैन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसे इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेना. नाउ एक्सी2 इज समथिंग कि हम जो थ्रेटेंड एनिमल्स हैं उनको नेशनल हैबिटेट से ले आएँ और हम कहीं और प्रोटेक्ट करें. So we have zoological parks, botanical gardens, wildlife safari parks serve the purpose. ठीक है. We also have XC2 conservation, which is मतलब it has advanced a lot. So we have gametes, हम जो स्टोर कर सकते हैं, जो वाइबल होते हैं, फर्टाइल रहते हैं लॉन्ग पीरियड्स के लिए. So we can use cryopreservation techniques. Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated through tissue culture methods. ठीक है. And different seeds can be kept in seed banks. ये आपका फर्स्ट चैप्टर सॉरी सेकंड चैप्टर में भी दिया हुआ है कुछ कुछ. नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि पहले अर्थ समिट हुआ था रियो द जेनेरियो में, which was the historic convention on biodiversity, biological diversity. Then World Summit हुआ था on sustainable development in 2002 in Johannesburg, South Africa. 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional, and local levels. Whew. So this was about it. I would suggest थोड़े से थोड़ा summary पढ़ लिया करो, which would be very helpful to you. I hope there are no questions. I mean, I cannot see any question in the chat, so I'm assuming that there is no question.
and you guys did मतलब समझ आया होगा सब कुछ. This is a pretty easy chapter. इसमें examples बहुत ज़्यादा है which you need to learn. मतलब I cannot make you learn. Numbers मैं नहीं याद करवा सकती. मैं कुछ और strategies मतलब process याद करा देती. Numbers मैं नहीं याद करा सकती. Even I am also very bad at remembering numbers, and I told you that I got confused in my board exam and it did not go well because of this. So um, all the best and thank you very much. Please do check out mock tests on ExamFactor's website, and I hope that you are preparing very well. So for today, it's like I'll call it off for today. Thank you so much for joining, and all the best for your preparation.